मुझे न छूना, परी हूँ मैं। फूलों में जो नूर है मेरा ही सुरूर है। आंखों में गुरूर है, ख्वाबों का कसूर है। थोड़ा सा करार है, थोड़ा सा खुमार है। किसका इंतजार है, कैसा इंतजार है। कोई तो ऐसा हो, सांसों को मेरी महका जाए। आई मैं तो आई नजर के अंगाने एक जहां से। लाई मैं तो लाई बाहर के अफसाने भी वहां से। ना मुझे छूना, ना दूर ही रहना, परी हूँ मैं, परी हूँ मैं। मुझे न छूना, परी हूँ मैं। धीमी धीमी धड़कने, मीठी मीठी उलझने। जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। देखो मेरी आरज़ू बैठी मेरे रूबरू। कैसी मेरी जुस्तजू बिखरी है चार सू। कोई तो ऐसा हो आके जो मेरा दिल ले जाए। आई मैं तो आई नजारों के अंदर। Okay, super awesome. Welcome. Good evening, everyone. Welcome to our second session, and I am super excited for this session. Are you all excited too? Let me know in the chat box. Yes. Are you all excited? Come on, show me excitement in the chat box. Great. Fantastic. See, guys, before we start, शाम हो चुकी है. We all have done so much of work whole day, and at the end of this day, don't you not think so? If I start the session or we all start the session, good evening, how are you all doing? Are you all doing good? How was your day? If I start the session like that, do you all will stay here? Don't you not think so? It is celebration time for all of us that we have completed one more day in our life successfully. We have got to leave it. We must have achieved so many good things, or maybe we have learned so many good things from the mistakes that we have made it. So don't you not think so? It's a time to celebrate. And how to celebrate? Celebration matlab dance. How many of you agree? Celebration means dance. So why we should not celebrate the end of the day with some moments? Yes and no? Instead of just getting tired and sitting on that sofa and telling her, oh, day was so tired and I'm so tired and now I can't do anything. It should not be there, right?
Great. So I want everyone to celebrate this movement at least 5 minutes. Dance and celebrate. That's the reason I ensure that, we put the music, we just keep come out of that mood, whatever mood we had, and now we are coming out of that and having a good mood here so that we can learn many things and we can implement all these things in our life. Great. So we had our first session, and in first session, just to recap what we did, we learned about our health score. We found out what was our health score, and then we learned how to form and healthy habits, how to work your conscious mind, and how to train your subconscious mind and tell your mind how to take the action. And for that, what was our first mini habit is to remind our mind every day that I am the best, I am at my good health, I love myself. So all these affirmation every day, you are reminding your mind that I am the best. And second thing, what we did is a visualization. Visualization and actualization both are interconnect each other. Don't you not think so? अगर हम visualize ही नहीं करेंगे तो क्या achieve करेंगे? What you will achieve? Every day if you are telling मुझे weight loss करना है, मुझे weight loss करना है, weight loss करना है, you are just telling your mind, but mind को एक clarity नहीं दे रहे हो, you are not giving any clarity to your mind. What your mind will assume? योर माइंड विल नॉट नो एनीथिंग कि क्या करना है। ये तो सिर्फ बोल रहे वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, कितना केजी करना है, कौन से ड्रेस में फिट होना है, व्हाट यू, सो वी हैव टू गिव द क्लैरिटी टू अवर माइंड। And visualization is the method where you give exact clarity and exact path to your mind and tell your mind that this is what you need to do. And that's where when you start doing the visualization, actualization will come, your mind will run fast to take the action. And that's the reason it is very important that we do these two things for the mind fitness. रोज खाना खाते हो, every day you eat because you need the energy, you need to do so many activity throughout the day, तो उसके लिए हम खाना खाते हैं, right? इसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे ही और what we do to keep ourselves physically fit, exercise करते हैं ना, we do lot of activities for our physical fitness. तो हमारे mental fitness का क्या? Are we doing something for our mental fitness? Holistic health, physical health, mental health, emotional health, and the social health. Everything is important. And जब तक आप mental health पे काम नहीं करेंगे, you will not see that your physical health is also improving. So both are interconnected. And those who have till now, if you have not did your mini habit, first mini habit, then I request all of you spend that 5 minutes, just take out that 5 minutes from your busy schedule and give some time to yourself to read to this affirmation and just do the 5 minutes of visualization. Even if you say you don't have that 15 minutes to do it, just close your eyes, put some nice smoothing music behind your ear and just do the visualization and make it a practice for you. And when you do it practice, you will see कि कहाँ से कहाँ पहुंचोगे. Your foot transformation will start to happen. Great, good. Now let's come to our second mini. Now we are going to talk about the second mini habit. Today we are going to talk about a very, very important topic about the food. क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, should I avoid eating the food or should I just eat soup and salad to lose the weight? So many questions. Actually, if you're speaking, your health is a very easy topic. It's a very easy way to maintain your health and lose the weight and maintain it. But so much of information is available on the social media. It made us so much of confused and it has become so confusing. So now my job is that to make it easier for you, and so that in an easy way you can take the steps to keep yourself healthy and achieve your health goal. So that is what my job is here, and that is what I do it, giving you a simple mini habits. So now let's start. Before we start,
There are 6 pillars of the weight loss and the health. जब हम health की बात करते हैं तो 6 pillars है उसके. तो what are the 6 pillars? We will talk about that. So your focus is only to balance these 6 pillars. Now, अगर कोई एक बिल्डिंग बन रही है और वो बिल्डिंग के नीचे पिलर्स है, द फाउंडेशन इज व्हाट पिलर्स. If one of the pillar of that building is not in a proper shape, do you think that building will be strong enough to build? Right? It will not be, because all the pillars are not balanced. Same way when it comes to our health. We need to ensure that all our 6 pillars are balanced. And when these 6 pillars are balanced, you can see that your health is getting improving and it is there with you for the lifelong. So it's not just about a diet, or it's not just about the exercise. It's all about balancing rest other things also. I've seen many people, they say just give me a diet plan. Okay, diet plan de do, I will start following it. Is it only a diet plan? If you don't know how your body is working, what's the use of that diet plan? आप ले रहे हो, blindly follow कर रहे हो, you are not understanding how your body is working, and then closely you're again going back, again changing your diet, but you are not understanding how your body is reacting on that. So what I feel, instead of just following on the diet, it is important that we should know how our body works. And when we know how our body works, we will be the nutritionist of our own. You will know how to eat, what to eat, and what to avoid, and you will be your own nutritionist. It is so simple. And yes, we are not going to go in a deep detail in learning everything about the science. No, we will learn a very, very simple in a easy language. जो हमें जरूरी है उतना ही हम बात करेंगे, एक्स्ट्रा की चीजें हम बात करने वाले नहीं हैं. तो we will learn only what we require and how we need to make a changes in our current lifestyle, in our current food habits right now. That we'll know. So get it ready? Yes? Agree? Let's go. So let's first see, I'll just share the screen with you all. We will first see कि ये कौन से 6 pillars है जिसकी मैं बात कर रही थी अभी. Which are the 6 pillars that we need to actually work on that? Great. So which are the 6 pillars? So if you ask me, what are the 6 pillars? The first pillar is about your food habit, what you eat. क्या हम खाना खाते हैं? Is it really helping giving a nutrition to my body, or is it just only because खाना खाना है इसके लिए मैं खा रही हूँ? Is it that the situation? You don't know what is happening inside the body. Second thing is how you eat. कैसे खाते हो आप? Are you eating in too much of hurry? Are you doing the overeating? Or are you missing on your hunger cues? Or you don't know कि when you're hungry और आपको भूख ही नहीं लगती है, or you don't know कि I am getting full and you unconsciously आप overeating कर जा रहे हो. So how you eat is also very, very important. Third important thing is the activity and exercises, smart movements. It's not about spending two hours in doing just the cardio, or two hours just doing any kind of exercises, and then at the whole day you don't have the energy, and whole day you feel like tired and you don't have that energy. That should not be there. Whatever exercise you do it in the morning, that should make you energetic, that will keep you energetic throughout the day. You should have that energy. So that's what is important when you do the exercises and when you do any activities. Fourth pillar, and very, very important, is the sleep. Are you getting a good quality 7 to 8 hours of sleep in the night? Or are you struggling and you don't have a proper bedtime, you don't have a proper wake up time? रात को 2-2, 3-3 बजे तक आप Netflix पे मूवी या जो भी है सीरीज देखते रह रहे हो, it is happening regularly and you're compromising on the sleep, then you're making a biggest mistake. Sleep is a healing. Sleep is the healing process for the body. बड़े diseases with proper sleeps are getting cured. So sleep is very, very important. I'll say, एक बार अगर आप exercise नहीं करोगे,
So that is okay. But a day if you're not getting a sleep, it is going to affect your health very badly. Fifth one is about your emotions, equally important, your mental health. How your emotions are. Whole day, are you feeling like sad, depressed, jealousy, all these negative emotions you have whole day? You always go on a trauma, boss ne gussa kiya, you immediately feel sad and you take long time to come out of that. I'm not telling that you will not, we don't feel sad, we will feel sad, but do you stay in that state for a longer time, or do you take and 5-10 minutes and you come out of that negative emotion? That is what is important when it comes to the emotions. So are your emotions are in under your control? Do you have a positive emotions, feeling happy, energetic? ना, आपको देख के लोगों को लगना चाहिए वाह व्हाट अ पर्सनालिटी, एनर्जी पास हो रहा है, पॉजिटिव एनर्जी पास हो रहा है, और देख के ऐसा अरे आई डोंट वांट टू बी विद दैट पर्सन, यू नो दैट इन. So that should not be there. Emotions, please. So are you working on your emotions? Are you working on your mind fitness to keep that positive emotions throughout the day? And the sixth one is the environment. आपके आजू बाजू का जो भी माहौल है, whatever is situation, how the people you are surrounded with. Do you have a toxic people around you who always deviate you from your goals, who always tell you chalta hai re, it's okay, you have this, oh chalta hai re, just let's watch Netflix for 2 hours, oh chalta hai re, let's do the smoking kind of thing, oh chalta hai re, some kind of this kind of, if continuously if you have these kind of people around you which are not making you achieve your goals, then you need to decide what company you want. Maybe there is a situation where we cannot avoid these people, but definitely we can have the more people who we resonate with, like-minded people. If your goal is to improve your health, do you have the people like this around you who always talk about the health, who always talk about nutrition, good food, who always talk about, keeping yourself active? Do you have this kind of environment? So that is very important. If you are with the toxic people who don't do exercise, always sit on a bed, they have a lazy lifestyle, रोज उठ के स्विगी से खाना मंगा रहे हैं, रोज उठ के पैकेट फूड खा रहे हैं, then that is going to affect you also. So we need to understand कि हम कैसे लोगों से सराउंड हुए हैं. That is your responsibility. We have seen things which are in our control. Last time हमने देखा, and we things which are not in our control. So these things are in your control. So you can have a choice. And of course, along with the people, your kitchen, your surrounding, घर पे जाते हैं, so when you enter on your dining table, do you see a sauce bottle? Do you see a different type of sausages? Do you see a bread? Do you see maybe a chips packets? Or do you see a dabba full of biscuits in front of you? Or do you enter if somebody enters in your home, they can see the kind of different fruits, a kind of different vegetables? Or when I enter, if you enter in your kitchen or open your fridge, what you get to see? Different kind of sausages and different kind of, what I'll say, all the kind of different packaged food. If that's the thing, you need to think of that. Or when I open your cabinet, what I will get to see? So your environment also plays a very important role. And all our sessions, we are going to talk about this 1-1-1-1 things, and we will going to have a 1-1-1-1 habit around all these 6 pillars. And when you have the habits around these 6 pillars, there is nothing else that you need to do when it comes to the health. You don't need to listen to the other people's कि ये rice खाना छोड़ दे, या green tea पीना है तेरे को, या you go to the gym and do 2 hours of exercise. You need to do all these things. You just need to focus on building your habits around the 6 pillars and you're done. Great. So now today we are going to talk about nutrition. We are going to talk about the food. So next 3-4 sessions will be completely about on a nutrition and the food. So that we will completely change your mind कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. Yes. So now, what to eat and avoid for a fat loss and disease reversal. क्या खाना चाहिए? So before that, before I tell you कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, I can directly go and tell you कि आप vegetables खाओ, fruits खाओ, ये खाओ, वो खाओ.
But if you are not understanding why I'm telling this to you, how our body process this food when it goes inside, why I'm telling you to eat vegetables, why I'm telling you to eat fruits, why I'm telling you to eat protein and not just the rice roti, you need to understand that. So when you understand that, you will come to know and you yourself will take an action to do that. So पहले थोड़ा इजीली हम समझते हैं कि हाउ आवर बॉडी वर्क्स. जो हम खाना खाते हैं, वॉट एवर फूड वी ईट, हाउ आवर बॉडी प्रोसेस दैट, अंदर जाके उसका क्या होता है. सिंपल लैंग्वेज आई एम गोइंग टू टेल यू, नॉट इन बिग थिंग्स, सो यू विल अंडरस्टैंड. सो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? हम सब लोग ने ये वर्ड सुना है, लाइक ऑल ऑफ अस हैव लिसन दिस वर्ड मेटाबॉलिज्म. एवरीवन, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल से कि मेरा तो मेटाबॉलिज्म कम है, मेरा मेटाबॉलिज्म कम है, इसके लिए मेरा वेट लॉस नहीं होता, आई एम नॉट एबल टू लूज द वेट. सो व्हाट इज दिस मेटाबॉलिज्म? क्या है ये मेटाबॉलिज्म? सी, वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं. नाउ व्हेन वी, व्हाई वी ईट फूड? फूड खाने जरूरी क्यों है? बिकॉज you do so many activities throughout the day. Your body also internally do so many activity. इतने सारे organs जो हमारे लिए freely काम कर रहे हैं दिन रात, your heart, your lungs, your brain, everything. तो इनको काम करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है. कैसे काम करेंगे? If they have to work, they need an energy, right? तो how this energy get produced in your body? Food that you eat. So it is very important that you we need to eat the food. Now if you see, अगर 2 दिन भी हम खाना नहीं खाएंगे तो how you start feeling? You don't have that energy, right? You don't have. So food that we eat, when it goes in our stomach, it get converted into energy, and this energy our body use to do all the functions, and that is called the metabolism. ये दुनिया में जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है, एनिमल्स है, एवरीवन हैज अ मेटाबॉलिज्म. सबका प्रोसेस अलग है, बट एवरीवन ईट्स, एंड दैट फूड जो भी खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है. वो एनर्जी हमारा बॉडी यूज करता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस जो हम करते हैं. सी राइट नाउ इफ आई एम मूविंग माई फ्री हैंड ऑल्सो, फीस्ट भी अगर मैं मूव कर रही हूँ, तो व्हाट इज हैपनिंग टू मूव दिस? मेरे मसल्स हाथ के हैं, वो एनर्जी यूज कर रहे हैं. सो दिस एनर्जी कहाँ से मिला? जो फूड हमने खाया वहां से. यू ऑल आर लिसनिंग टू दिस टू राइट नाउ टू मी. नाउ योर ब्रेन इज फंक्शनिंग. सेल्स, ब्रेन्स, जो ब्रेन्स के जो सेल्स है, फॉर ऑल दैट सेल्स ऑल्सो एनर्जी दे रिक्वायर. तो ये एनर्जी कहाँ से मिला हमको? फूड में से. सो अंडरस्टैंड, ईटिंग फूड is very, very important for us. We cannot survive without eating the food for a longer time. So now, अब ये एनर्जी बॉडी यूज कर रहा है. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, अरे फूड तो खा रहे हैं, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो वेट कैसे बढ़ता है मेरा? मेरा बॉडी तो एनर्जी यूज कर रहा है, फूड जो मैं खाती हूँ वो कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में और बॉडी यूज कर रहा है, तो वेट कैसे बढ़ रहा है? सो वेरी फर्स्ट थिंग, हाउ दिस एनर्जी गेट यूज इन अ बॉडी. चलो हमने खाना खा लिया, एनर्जी अभी जो बॉडी में है उसको बॉडी कैसे यूज करे? वेरी फर्स्ट थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल, हम even though if you are not doing any function, suppose if you are also lying down on a bed, अब बेड पे बैठे हो दिन रात, कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, still your brain is functioning, your heart is functioning, your lungs are working, your all internal organs are working for you, they are not stopping. आप बेड में बैठे हो, उनका तो काम दिन रात चालू है, राइट? सो ऑल दीज इंटरनल ऑर्गन्स टू फंक्शन, एनर्जी लगता है. तो जो हम खाना खा रहे हैं वो 60% ऑफ एनर्जी हमारा बॉडी यूज करता है इंटरनल फंक्शन के लिए. कितने खुश हो गए ना? चलो 60% एनर्जी तो बॉडी खुद ही यूज कर रहा है. मेरा तो 60% काम तो बॉडी ने यूज किया, राइट? So out of 100%, 60% energy your body is used, and we normally say as a BMR, basal metabolic rate, जो हर एक का अलग अलग होता है. So
60% of energy now your body use. बचा कितना? 40%. Now our job is how you are utilizing this 40% of energy. अगर ये 40% of energy आपने properly utilize नहीं किया, what will happen? ये जो 40% एनर्जी है आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? वो स्टोर हो जाएगा एज अ फैट. So now our responsibility is 60% of body use क्या? Now if your functions, like if you're having a good lifestyle, तो ये metabolism भी आपका बढ़ सकता है. You can increase this. The calories your body is using, maybe it will become 60, 65, 70% also. But it depends how is your lifestyle is. But जो बचा है 30%, how your body use. Now 60% तो internal functions के लिए use किया. अब उसके अलावा हम we move our hands, we eat, हाथ मूव कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, we walk और we do lot of activities throughout the day. तो ये एक्सटर्नल जो हम अदर एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो मूविंग एंड रनिंग एंड एवरीथिंग जो भी करते हैं, एक्सरसाइज एवरीथिंग, ऑल द फिजिकल एक्टिविटी, वो जो एनर्जी आप जो एक्टिविटी करते हो, almost 25 to 30% of energy your body will use in that. उसमें आता है आपका नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी एंड exercise activity. So why I tell you that you need to complete so many steps, you need to keep yourself active throughout the day, that comes under your non exercise activity, जो almost 15-20% के आसपास है. अगर आपने खुद को एक्टिव नहीं रखा, if you are not keeping yourself active throughout the day, तो ये जो 20% एनर्जी कंजम्पशन जो बॉडी उसमें कर रहा है वो कंज्यूम नहीं होगा, एंड दैट विल गेट स्टोर एज अ फैट. दैट्स द रीजन इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी कीप आवरसेल्फ एक्टिव. और जो ऊपर से remaining 10% is about your exercise that you do it every day or twice a week, thrice a week, 4 times a week. जो एक्टिविटी करते हैं वो जो एक्सरसाइज है वो. So these 30% is very, very important. If you are not keeping yourself active, if you are not exercising properly, you are not using this 30% of energy and आप वो store कर रहे हो फैट के रूप में. और बचा जो 10%, 8% एनर्जी है, that is body used for the digestion. Now here is also very important trick is important कि आप जो खाना खाते हो, this 10% of calorie burn जो energy जो body use करता है, it depends on what kind of food you eat. जैसे कि आप ज्यादा सिर्फ कार्ब्स खा रहे हो, रोटी राइस यही खा रहे हो, तो वो उसके डाइजेशन के लिए बॉडी को ज्यादा एनर्जी नहीं लगती है, बॉडी विल यूज लेस एनर्जी. बट व्हेन यू यूज मोर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन हैज द हाईएस्ट एनर्जी कंजम्पशन. डाइजेशन के लिए प्रोटीन को सबसे ज्यादा कैलोरी लगती है. And that's the reason when you eat protein rich food, you feel आपको लगता है कि you are full for a longer period of time, क्योंकि वो खाना आपके पेट में ज्यादा देर तक रहता है. When you have that food for a more time in your stomach, you don't feel hungry that's the longer time, because वो time ज्यादा लेता है. So this way your total 100% of energy is used, and उसको बोलते हैं total energy expenditure. 60% आपका body use कर रहा है, but बचा 40% आप कैसे use कर रहे हो, whether you are using it not, that will show whether you are losing the weight, whether you are gaining the weight, or you are maintaining the weight. It is called the energy balance. तराजू है ये. जितना आप आपके मुंह से अंदर पेट में डाल रहे हो, उतना अगर बाहर नहीं जा रहा है, मतलब जितना पेट में अंदर गया वो ज्यादा है, और जितना पेट में से बाहर आया वो कम है, तो क्या होगा? You will not see that your weight is going down. कुछ भी कर लो आपका वेट कम नहीं होगा. बट यहाँ से जो पेट के अंदर जा रहा है वो थोड़ा कम है, मतलब है बराबर है, वो कम नहीं है. वी आर ईटिंग प्रॉपरली, बट
जो बाहर आ रहा है वो थोड़ा ज्यादा है, क्या होगा? You will see that your body is losing the weight. And if it is equal, same to same है, so you will see that okay, your body is, this is a simple science, your body works on weight loss strategy. It is simple energy balance science. If you see that your weight is going down, you're consuming more energy. अगर आपका वेट कम नहीं जा रहा है, आप ज्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहे हो, आप ज्यादा खा रहे हो, जिसको जरूरत नहीं है. सो नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, अरे ये तो सिंपल है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं कल से खाना ही खाना छोड़ देती हूँ. हाँ, मैं अभी अरे मैं तो खाना ही खाना छोड़ देती हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं कम खा रही हूँ. इवन इफ आई डोंट डू एनी एक्टिविटी, ऑटोमेटिकली कम खा रही हूँ, मेरा वेट कम हो जाएगा. डू यू थिंक इट इज अ करेक्ट स्ट्रैटेजी? क्योंकि 60% एनर्जी तो आपका बीएमआर में जा रहा है. अगर आपके इंटरनल ऑर्गन्स को उतना एनर्जी प्रॉपरली नहीं दोगे, तो डू यू थिंक दैट योर हेल्थ विल बी इन प्रॉपर कंडीशन, योर इंटरनल ऑर्गन्स विल वर्क प्रॉपरली? नो. So going on this fat diets like GM diet, I have seen it was so famous previous, when I was working in a corporate, I have seen many ladies, my colleagues used to do the GM diet. उस टाइम पे मेरे को इतनी समझ नहीं थी because I didn't know anything about. Now I realize what is that GM diet, why this GM diet is not working, or any kind of fat diets doesn't work. अगर आपका आपका अगर इनटेक, आपके बॉडी को पूरी फंक्शन करने के लिए अगर 1500 कैलोरीज की जरूरत है, एनर्जी, कैलोरी मतलब एनर्जी, उसको सिंपल लैंग्वेज में उसको एक यूनिट दिया है कैलोरी करके, एनर्जी का यूनिट है कैलोरी, जैसे हम बाकी के यूनिट्स होते हैं हमने पढ़ा. So if your energy requirement is 1500 calories, और आप सिर्फ दिन का 400-500 खा रहे हो, तो क्या होगा? You will see that weight loss is happening, but do you think you will able to sustain that? 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल कर पाओगे? नहीं होगा. So that's the reason maintaining this balance is important, and then losing the weight effectively is important. That is what is important. So simple strategy है, we need to understand कि हमें थोड़ा कम खाना है. अगर हमारा रिक्वायरमेंट 1500 कैलोरीज का है, तो हमको 200-300 कम कैलोरीज कम खाने, ना कि हमको 1000 कैलोरी कम खाने हैं. सिर्फ 200-300 कम खाने हैं. उसके वजह से क्या होगा? यू विल सी दैट योर वेट लॉस इज हैपनिंग, अलोंग विद दैट यू आर डूइंग ऑल द एक्टिविटीज. Did you understand? मतलब whatever I told you, did you got कि how your body is working? Why till now many of you who was trying to lose a weight, समझ में आया क्यों नहीं हो रहा है अब तक weight loss? क्यों नहीं हुआ? Is the simple strategy. Now you need to make sure that कि आप keep yourself active at your level, whatever you are able to do it. And then you will see that कि आपका weight loss हो रहा है. And of course, how to eat that, then I will tell you कि कौन से hacks है जिसके वजह से I am eating well, but I am telling my body कि I am eating less. मतलब आप इनडायरेक्टली आपके बॉडी को बोल रहे हो कि मैं कम खा रही हूँ, बट आप ज्यादा खा रहे हो. So there are some hacks that we can use it. पहले, डू यू हैव योर नोटपैड और कुछ है ऐसा आपके पास अभी हाथ में? आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन आज के पूरे दिन का या कल का, आज का दिन अभी तक डिनर हुआ नहीं है, तो मे बी कल का सुबह से लेके रात तक, what are the things that you had. सुबह उठे, I had water, और मे बी whatever you had, maybe you had whatever, जो भी आपने सुबह खाया, फिर ब्रेकफास्ट में क्या खाया, फिर मिड मील में क्या खाया, फिर आपने लंच में क्या खाया, फिर इवनिंग में क्या खाया, डिनर में क्या खाया, रात को कुछ स्वीट खाया है तो. आई जस्ट वांट यू टू राइट डाउन दैट ऑन योर पेपर नाउ. एक पेपर में उसको लिख दो क्विकली.
ओके, जितना भी लिखा है इट्स फाइन, यू मस्ट हैव रीड एटलीस्ट सम, कुछ तो लिखा है, ज्यादा आपने जो भी लिखा है ना। इफ यू सी योर डाइट, अगर आप सुबह से लेके आप शाम तक आपका डाइट देखोगे, मे बी यू नो, नाउ दोज हु ऑलरेडी अटेंडेड द सेशन लास्ट टाइम एंड यू नो कि हम क्या क्या मिनी हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं, मे बी यू हैव ऑलरेडी दैट चेंजेस, बट दोज हु आर न्यू, लेट्स सी, जिनको अभी तक कुछ पता नहीं है, व्हाट वी डू नॉर्मली, हम इफ यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आपने पानी पिया होगा, और मे बी यू हैव सम अदर, maybe some of you must have your fruit or maybe nuts खाए होंगे, और नहीं तो maybe some of you have started with a cup of tea, और उसके साथ आपने कुछ बिस्किट खाया होगा या रस खाया होगा, ब्रेड खाया होगा, कुछ तो खाया होगा, then you came to your breakfast. Breakfast में normally हम क्या खाते हैं, we have पोहा, we have idli, dosa, maybe egg, paratha, something out of that you had, right? This is a normal breakfast that all Indians have. देन दोपहर में अगर भूख लगी होगी बीच में, तो मे बी एक फ्रूट खाया खाया होगा, नहीं तो या तो ऑफिस में किसी का बर्थडे है तो एक केक का पीस उठाया होगा वहां से, या किसी का बच्चा हुआ है तो उसने आपके पास पेड़ा ला के दिया है तो आपने वो एक पेड़ा खाया होगा, समथिंग लाइक दैट यू मस्ट हैव ईटेन। देन इन द लंच में हम क्या खाते हैं, रोटी, राइस, दाल, सब्जी, यू हैव इवनिंग में अगेन, चलो इवनिंग में चाय के साथ अगेन कुछ बिस्किट खाया होगा, रस खाया होगा, या तो अभी तो बारिश गिर रही है तो किसी ने समोसा या तो भजिया, कुछ तो चीज तो ऐसी खाई होगी, एंड देन डिनर में भी व्हाटएवर, दाल, राइस। नाउ इफ यू सी, हमारा पूरा दिन का जो खाना है, इट्स ऑल कुक फूड। यस, मोस्ट ऑफ द फूड दैट यू हैव ate इज अ कुक फूड। हम उसको कुक करके ही खाते हैं। When you put any food on the stove or when you cook any food, whether it's a home cooked food, I am not going in that कि वो घर का बनाया हुआ बाहर का बनाया, I am not going in that. Whatever food you cook, you put it on your stove. जब वो कुक होता है तो वो acidic हो जाता है. It becomes a acidic in nature. Now analyze your whole day food. आपने सुबह से लेके शाम तक, रात तक जो भी खाना खाया है, analyze that food. Is it not that most 90, 95, 80, 100% maybe some of you कि ज्यादातर हम एसिडिक खाना खाते हैं दिन भर, because it's a cooked one. I'm not going whether it's a home cook or not. Over and above, अगर हम कोई पैकेज फूड खाते हैं, if you're eating maybe from outside or maybe you went to the restaurant, you have a restaurant curry, or you went to the McDonald's, you had that French fries or burger, or you picked up some package or some chips or some biscuits, तो वो तो super acidic हो गया, because it's a processed, this more processed। घर का बनाया तो एटलीस्ट थोड़ा सा प्रोसेस्ड होता है, बाहर का बनाया it is more, so it becomes a super acidic. So even the what we are doing it, 90-95% of the food that we eat whole day, it's acidic in nature. And do you know the food which is acidic in nature, it will bring so many problems in our life? पहले तो एसिडिटी, इफ यू हैव दैट एसिडिटी प्रॉब्लम, बहुत बार एसिडिटी हो रहा है, तो दैट मीन्स यू आर ईटिंग टू मच ऑफ एसिडिक फूड। ज्यादा एसिडिक फूड increases your body fat, you gain the weight, increase your cortisol level, lowers your growth hormones, bloating, constipation, headache, depression, dye skin, acne, bone, muscle, osteoporosis, diabetes, heart attack, liver problem, reduce in energy, kidney stone, and even cancer too. So first important thing that we have to do it, that we have to start including an alkaline food in our routine, in our meals. क्या होता है ये अल्कलाइन? अल्कलाइन फूड मतलब जिसमें कुक नहीं है वो, इट इज नॉट कुक्ड, एंड दैट्स द रीजन इट इज अ अल्कलाइन इन नेचर।
जितना एसिडिक खाओगे उतना एजिंग फास्टर होगा, वेट गेन होगा, यू आर प्रोन टू मोर डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस. And when you start eating an alkaline food, you will be looking more younger, healthier, and you will see that your fat loss is also happening. So, should we stop eating all the cooked food? Should we stop eating all cook खाना cook करना ही छोड़ देना है क्या? No, no, I'm not telling that you should do that, but we need to start balancing it. Are we balancing our food? Along with that acidic food, are we balancing and including our more and more alkaline food in our diets? So first, we need to start eating an alkaline food. All the raw foods, your fruits and the vegetables are alkaline in nature. So start including variety of fruits and variety of green vegetables daily in more quantity in your diet. हमारा इंडियन कल्चर क्या है, हम इतनी सी सब्जी लेते हैं, उसके साथ इतना राइस रहते हैं, इतना इतना सारा दाल दाल भी कम होता है एक्चुअली, राइस ही ज्यादा होता है, दाल इतना होगा, सब्जी इतनी होगी. हाउ मच ऑफ वेजिटेबल्स वी आर ईटिंग? ओनली दिस मच. उसके साथ सैलड भी नहीं होगा. वी विल नॉट ईट द सैलड. We don't have a culture of eating fruits regularly, at least 2 to 3 servings of fruits daily, eating salads regularly. So we need to change our food patterns. First thing what I want you to do is start including salad daily in your diet, your lunch, your dinner. Salad nahi to soup dinner में. और इतना सिर्फ दो, when I tell the people that you start eating salad, तो कितना होगा? 2 slices ककड़ी के हो गए और 2 slices कैरेट के होंगे, हो गया. So eat a proper bowl of salad. First when you start your lunch or when you start your dinner. And eat at least 2 servings of fruit daily in your diet. So this is the first thing. Include more of alkaline food. Balance करना है उसको. सिर्फ acidic खाना नहीं खाना है. You have to balance that acidic with the alkaline. And when you maintain that balance, it is one of the best strategy that you are giving a less calories to your body, but you are eating more. Because the fruit and vegetables, they are high in fiber. और fiber क्या होता है? जो body में जाके digest नहीं होता है. It doesn't get, even though if you're eating, that means you are eating, you're telling yourself that you are full, you ate so much, but indirectly you are eating less because वो खाना पेट में जाके digest नहीं होगा. It will not get digested. So that's the reason it is very important that we include the enough of fiber food in a diet. Yes. Second important thing is about your antioxidant. Second important thing is about our antioxidant. So first हुआ alkaline. So are you all ready कि from tomorrow you will ensure that कि आप आपका खाना balance करके खाओगे? How many of you give me a thumbs up? You will include 2 fruits in your diet and you will ensure that आपके lunch में और dinner में salad होगा and you will have a green vegetable. कंजूसी नहीं करनी है. बहुत टाइम जाता है ग्रीन वेजिटेबल्स को कुक करने के लिए, नहीं, उसको साफ करने के लिए. नो, बट फर्स्ट थिंग यू हैव टू आस्क योरसेल्फ व्हेन यू ईट, एम आई ईटिंग दीज 2 थिंग्स? और इतना सा वेजिटेबल नहीं, इट शुड बी प्रॉपर क्वांटिटी. देन सेकंड थिंग कम्स, सो which food are alkaline? I told you, vegetables and fruits you need to include. Second important thing is antioxidant. Eat more of antioxidant. Now आप बोलेंगे antioxidant मतलब you all know कि antioxidant मेरे को ग्रीन टी से ही मिलेगा.
बिकॉज हम वो टीवी पे ऐड देखते हैं ना कि ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो पियो, दिन भर एंटीऑक्सीडेंट के लिए ग्रीन टी ही पीते रहो. इट्स नॉट लाइक दैट कि इफ यू वांट टू टेक एंटीऑक्सीडेंट मतलब सिर्फ आपको ग्रीन टी में ही मिलेगा या बेरीज में ही मिलेगा. इट इज नॉट लाइक दैट. आई कैन नॉट अफोर्ड द बेरीज, सो आई कैन नॉट हैव द एंटीऑक्सीडेंट. इट्स अ कंप्लीटली misconception. Why we need to first eat the antioxidant? आप जब एप्पल कट करते हो एंड व्हेन यू कीप इट, व्हाट हैपन, वो ब्राउन हो जाता है थोड़ी देर के बाद, बिकॉज इट बिकम्स अ ऑक्सीडेंट. सेम थिंग इज विथ आवर बॉडी. हमारा बॉडी भी एज वी स्टार्ट एजिंग, नाउ वी आर इन द प्रोसेस, हम ऑलरेडी एज हो रहे हैं, वी आर एजिंग नाउ, वी आर नॉट सो यंग. सो आवर बॉडी, यू कैन सी मोस्ट ऑफ आवर स्किन्स झुर्रियां आने लगती है. वी सी इट ऑक्सीडाइज, जैसे एप्पल ऑक्सीडाइज वैसा हमारा स्किन भी ऑक्सीडाइज होने लगता है. And to prevent that, we need to include the antioxidant foods which are rich in antioxidants. Colorful vegetables. We get so many colors of vegetables. Jitna colorful vegetables diet में होगा, you will have a more antioxidant. Because when you have oxidant food is again will make you age faster. Antioxidant keep you more younger. तो जितना antioxidant food आप rich खाओगे, you will look younger. You will see आपका fat loss भी proper हो रहा है and it will keep you healthy for a longer. So antioxidants किस किस में होगा? Fruits, vegetables, different kind of pulses, whole grains. All these will have an antioxidant. What is happening to my mouse? So fruits, vegetables, nuts and seeds, lentils, pulses, whole grain. All these things will have an antioxidant, especially all the colorful. जितना colorful आप खाओगे उतना आपका antioxidant ज़्यादा होगा. Different kinds of vegetables. There are so many colorful vegetables. There are so many colorful fruits. So have the variety of these colors in your diet. Ask yourself, when you eat your lunch, when you eat your breakfast, does your plate look like a rainbow? एक खुद को क्वेश्चन पूछना है कि कितने कलर्स हैं मेरे प्लेट में. When I eat, पूरा प्लेट आपके सामने है, count how many colors you have. If you have only 2-3 colors in your plate, something is wrong. You are not eating properly. At least you need to see that बहुत सारे कलर्स दिखने चाहिए आपके प्लेट में. So that is the correct way. And the third is micronutrient. Micronutrient मतलब पोषक तत्व जो हमारे बॉडी को कम क्वांटिटी में लगता है. इट वी रिक्वायर इन वेरी लेस क्वांटिटी, बट इट इज very important. Very important, because today most of the diseases which are happening is because of the deficiencies in micronutrient. तो हमें ensure करना है कि हमारा खाना rich of micronutrient हो. कि जैसे बिल्डिंग बनाने के, if you see कि हम घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, it needs a lot of raw material like sand लगता है, सीमेंट लगता है, bamboo and all these things. वैसे ही ये बॉडी को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है. वो रॉ मटेरियल है न्यूट्रिएंट. एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक होता है माइक्रो. विल नॉट गो इन डिटेल इन दैट. अभी हमको फिलहाल इंश्योर करना है कि वी ईट द फूड विच इज rich in micronutrient. And of course, how you will get it when you eat these varieties in your diet. Don't be कंजूस. प्लान करना है अपना मील. टुडे मॉर्निंग क्या बनाऊं लंच के लिए, क्या बनाऊं ब्रेकफास्ट के लिए, क्या बनाऊं डिनर के लिए. इफ दैट्स द सिचुएशन, यू विल एंड अप मेकिंग एनीथिंग. प्लान. आपका ग्रोसरी प्लानिंग आपका संडे को जो आप करते हो उसमें यू शुड ऑलरेडी प्लान की फॉर नेक्स्ट वीक व्हाट आई वांट, व्हाट आर द वेजिटेबल्स आई वांट, कैरेट, कुकुम्बर, whatever, capsicum, different kind of vegetables, मेथी, पालक, बीन्स, all greens. जितना greens रहेगा उतना आना है. Every day there should be 1 or 2 greens you need to eat. And very important is the food which is rich in protein. Very important. If you want that your weight loss, your weight loss should happen sustainably,
प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन का digestion, the calories where the protein burns during the digestion is more. It takes longer time to burn the calories, तो वो आपके पेट में ज्यादा देर तक रहता है, and it keeps you full, and then what will happen, you will not eat more food, you are satisfied with eating that. So it is very important that we include enough of protein in our diet. हमारा इंडियन कल्चर ऐसा है कि लाइक खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया. वी आर नॉट लाइक दैट कि हमारे मील में एक ऑप्शन प्रोटीन का होना ही होना है. व्हाट विल हैव, दाल चावल सब्जी, उसके साथ कुछ पापड़ होगा या अचार होगा, दैट्स इट. प्रोटीन है नहीं है, वी आर नॉट कंसर्न. कब तो खा लिया, कभी तो एग खा लिया, कभी तो पनीर खा लिया, कभी तो जाके फिश खा लिया. इट इज नॉट दैट कंसर्न कि हर एक मील में है या नहीं. सो यू नीड टू एंश्योर कि व्हेन आई ईट माय ब्रेकफास्ट, व्हाट इज दैट वन प्रोटीन ऑप्शन आई एम आई ईटिंग. नाउ इफ यू टेल मी कि मैं तो दाल, लंच के टाइम पे मेरा तो दाल एवरीडे होता है, लेट मी टेल यू, इट इज, you don't get enough of protein from that दाल. और आप कितना खाते हो, एक कटोरी, और वो भी पानी वाला दाल, कितना प्रोटीन होगा उसमें. And it is not the pure source of protein, dal. It's not. You need to have a proper protein source like tofu, soya, paneer, sprouts, egg, those who eat chicken, fish. These are the proper sources of protein. So you need to ensure कि इसमें से कोई तो एक ऑप्शन आपके ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में हो. And we are not used to of doing. We are not used to. हम consciously हम अपने आप को पूछते नहीं हैं. Even though if you make a dosa, sorry, if you make any पोहा, हम सुबह पोहा बनाते हैं. Do you ask yourself कि वो पोहा के साथ मेरा क्या प्रोटीन का सोर्स मैं खा रही हूँ? Do you ask yourself, am I putting a lot of vegetables in that poha? Or is it that सिर्फ पोहा बना लिया, ऊपर से थोड़ा बहुत कोरिएंडर और डाल दिया और खा लिया? Am I making it rich of vegetables, rich of protein? So this is a question you need to ask. If you make whatever, if you make poha, or if you make dalia, or if you make upma, how many vegetables you are putting in that? कितने vegetables डालते हो आप? Don't tell me that I put onion and tomato. उसके अलावा कौन से ग्रीन वेजिटेबल्स डालते हैं? डू यू पुट कैरेट, डू यू पुट कैप्सिकम, डू यू पुट पीस, डू यू पुट बीन्स, जो भी आपको अच्छा लगता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और वन मोर एग्जांपल आई वांटेड टू गिव यू, लाइक इफ यू मेक अ डोसा, हम डोसा बनाते हैं. how can you make that dosa protein rich? ये तो सिर्फ डोसा है, इसमें मैं प्रोटीन रिच कर, कैन आई ग्रेट करके उस पे मैं पनीर डाल सकती हूँ, ग्रेट करके उसमें मैं टोफू डाल सकती हूँ. और those who eat eggs, they can make and separate egg out of that. Or some of you may be like the egg dosa kind of thing. You have a different choices. So how can I make it a protein rich? So now your responsibility is, कल से आप जो भी breakfast खाओगे, आपको खुद को एक क्वेश्चन पूछना है, is it a protein rich and vegetables rich breakfast or not? Second comes is your lunch. See, now I don't want to go in more detail on that because we will be having a separate topic कि आपका lunch plate कैसे होना चाहिए, आपका dinner plate कैसे होना चाहिए, आपका breakfast plate कैसे होना चाहिए. Are you all getting what I'm trying to tell you? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि क्या जरूरी है, what is important? Great. So हमने यहाँ तक देख लिया. डोंट वरी, इवन इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग टू मच, ज्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा ब्रेकफास्ट कैसे होना चाहिए, लंच कैसे होना, डिनर होना चाहिए.
I am going to tell you how should be a breakfast plate. I am going to tell you how should be a lunch plate, how should be a dinner plate. सब कुछ बताऊंगी. आपका स्नैक्स कैसे होना चाहिए, सब कुछ हम बताने डिस्कस करेंगे. So don't worry, don't take tension. Just listen and try to implement whatever I am trying to tell you. Yes. So now हमको इतना देखना है कि when we have breakfast, lunch, dinner, is it full of vegetables and protein rich है या नहीं. तो उसको कैसे बनाना है protein rich, we will see in our session. So today's session we will just talk about कि breakfast के बारे में हम बात करेंगे. फिर next session में हम बात करेंगे lunch, dinner के बारे में. Okay. I don't know what is happening here. Okay. So अब हम देखते हैं कि हमारा मैजिक प्लेट कैसे होना चाहिए. कैसे होना चाहिए हमारा ब्रेकफास्ट प्लेट, कैसे होना चाहिए हमारा लंच प्लेट, डिनर प्लेट. तो वो हम देखेंगे. तो फर्स्ट, हाउ यू शुड स्टार्ट योर डे. बिफोर दैट वी गो, हमारा फर्स्ट मील ऑफ द डे इज वेरी इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे. दैट विल डिसाइड हाउ योर होल डे इज गोइंग टू बी. कैसा आपका पूरा दिन जाना चाहिए, जाने वाला है, वो आपके फर्स्ट मील पे डिसाइड होता है. So let me ask you, how many of you, how you start your day? How many of you start your day like this? How many of you start your day with chai or coffee? अरे एक कप चाय और कॉफी, चाय का पीऊं नहीं तो तब तक एनर्जी मिलने ही नहीं वाली है. तब तक I cannot start my work. If that is the situation you have, this is the first thing you need to tell you are on a wrong path. If you have, we have discussed this last in first session कि आपको अगर कोई भी चीज एनर्जी के लिए, आपको अगर कोई चीज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, if you have to depend on tea, coffee, cigarette or something like that, you are not on a correct path. So if you are starting your day with tea and coffee, I want you to change that. Now you will tell me, अरे ये तो मैं सालों से करती आ रही हूँ, how can I immediately? It is not possible. I'm not telling you to immediately stop that. What I'm trying to tell you is to change that. Instead of starting your day with tea and coffee, start your day with some fruit or dry fruit. Just change it. अभी अगर चाय और कॉफी से डे चालू हो रहा है तो what I am telling you, don't stop it. Maybe you will take some time to do that. But right now, before drinking tea and coffee, at least have one any fruit, maybe a banana or maybe a whatever, apple, any local fruit. कुछ नहीं है तो maybe 7 to 8 almonds and 1 walnut soaked wala, and then you can have your tea and coffee. So how many of you agree that you will do it from tomorrow? Those who are already doing it, fantastic. But those who are not doing it, I want you to start your day with a fruit or dry fruit. That is your second mini habit. Don't start your day with tea and coffee. Start your day with any fruit or dry fruit. How many of you are going to do it from tomorrow itself? कल से चालू होगा ये. Yes, give me yes in the chat box. Are you going to do it? Great. So इसके बाद आता है हमारा breakfast. So we will do one thing. We will finish our breakfast and then lunch and dinner का हम next session में लेंगे. और do you want कि breakfast, lunch, dinner सब साथ में next session में करना है? Or should we do the breakfast अब आज खत्म करें? What do you think? Should we? Yes, we will discuss. Do you think that you have a more 15 minutes to spend? If not, we will stop and we'll do it. Yeah, breakfast now. ठीक है. तो 10 मिनट है आपके पास, तो we will do the breakfast option right now, and lunch and dinner we will do on the next session. So first thing comes is how you are starting your day. So we are not starting our day with tea and coffee, but we will make sure that we will start our day with any fruit, or we will start a day with dry fruits, whatever you have. So you have to make sure that कि पहले दिन पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपके घर में कुछ ना कुछ ये ऑप्शन है. अगर नहीं होगा, सुबह उठ के देखोगे अरे फ्रूट नहीं है, ड्राई फ्रूट नहीं है, you will end up not eating. So you need to ensure, plan, as I told you, previous day पे आपको पता होना चाहिए कि कल सुबह के लिए मेरे पास है या नहीं.
If it is not there, go and take it right now and ensure that you have. Then now we will see कि हमारा breakfast कैसे होना चाहिए. What to have in the breakfast. Normally हम क्या खाते हैं breakfast में? चाय, बिस्किट, खाकरा, cornflakes, muesli, sandwich. Is this the breakfast that we have? If this is the breakfast you are having, then something is wrong. Even though if your goal is not a weight loss goal, your goal is to keep yourself healthy. See, we are all now not in the age of 20s. We are not in our 20s now. All of us are above 30. तो हम ऑलरेडी ऐसे सिचुएशन पे पहुंचे हैं जहां पे हमारा हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ना कि जस्ट लूजिंग द वेट एंड लुकिंग स्लिम एंड ट्रिम. वो हमारा अब मोटो नहीं है. यस, इट इज देयर, बट मोर इम्पोर्टेंट इज हेल्थ की 70-80 के एज तक भी मैं कैसे ऐसे ही फिट रहूं. दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. सो दैट्स द रीजन वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या खा रहे हैं. So if you are starting your breakfast with these kind of items, biscuits and rusk and khakra and cornflakes, then you need to ensure that you need to change your pattern and you eat the healthy, good breakfast. It is essential to have a breakfast that provides a sustainable energy and support recovery and keep you feeling full and satisfied for the long time. If you want your whole day should go well, if you want that your whole day should be energetic, then you should have a proper homemade cooked protein rich and the fiber rich breakfast. अगर वो करना चालू करोगे, you will never have any problem of acidity, migraine, all this kind of bloating, all this kind of issues. So first thing, starting a day with fruit or dry fruit, and second comes your breakfast. So how should be our breakfast? कैसे होना चाहिए? Add dry fruits. If you are having a fruit in the morning, then ensure that कि आप आपके breakfast में आप dry fruits add कर रहे हो. Maybe 5 to 7 almonds plus 1 or 2 walnuts. इतना ही खाना है. Now if I tell, some of you must be telling, अरे almond और walnuts खाना है तो मैं 20-30 almond खा सकती हूँ दिन में, और मैं 2-3-4-5 walnuts खा सकती हूँ. No, because almonds and the walnuts, they are fat. They are good fat. They are not bad fat. Your body is required. But good fat का मतलब भी यही है कि वो fat ही है. And when you eat fat, it gives you the more calories. 1 gram of fat gives you a 9 calories. Just मतलब as compared to your protein and carbs, double calorie आपके fat में से आपको मिलता है. So if you increase the quantity, it will not benefit you if your weight goal is weight loss. So you need to limit your quantity, whatever have. जैसे ही अगर खाने में वेजिटेबल ऑयल ज्यादा डाल रहे हो, अलार्मिंग सिचुएशन है. यू मस्ट बी थिंकिंग, अरे मैं तो कम खाती हूँ, लेकिन अगर खाने में ऑयल ज्यादा जा रहा है बहुत, then that is also one sign that you are eating the fat which is more in quantity. तो लिमिट में खाना है. So you need to eat only 5 to 7 of almonds or 1 or 2 walnuts which you can soak in previous night, and you can wash off, throw that water, and then you can have it. उसको छिलना चाहिए, नहीं छिलना चाहिए. All these things are not important. These are just like social media पे उसको इतना बड़ा बना दिया सबने कि आलमंड्स को सोक करके खाओ. नहीं, सोक करके तो खाना है, because what I think कि you never know कि वो कहाँ से आता है, from which store it comes, and God knows who have tasted that. I don't want to go in all these things. तो वॉश करके खाना, it is more hygienic, right? So it is very important कि आप उसको पील करना है, नहीं करना है, it's not important. आप पील करके खा रहे हो तो खा सकते हो, कब पील करके खाओ, कब ऐसे ही खाओ, that doesn't matter, right? Then second cheese is include lean protein source in your breakfast. जो अंडे खाते हैं, it is a super food, I will tell. You don't need to think of anything. If you are eating eggs, let me tell you, eating 1 or 2 eggs daily is recommendable, or it is completely safe. हम लोग क्या बोलते हैं, अरे 2 egg खाएंगे तो
और मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। बाकी की जो चीजें खाते हो, जो पैकेज फूड खाते हो, इतना सारा तला हुआ चीज खाते हो, उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, दैट वी डोंट थिंक। बट व्हेन वी वांट टू ईट द गुड फूड विच इज एक्चुअली गुड, वी थिंक दैट कि येलो में खाऊं तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, सो आई कैन नॉट ईट द आई डोंट नीड टू ईट द एग एवरी डे। Let me mute everyone. Yes. So 1 or 2 eggs daily is recommendable. You can definitely eat it. There is no harm in that. And what I say is basically though eat eggs, so it is a good source of like कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अंडे ले लो, उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल दो, मेक एन ऑमलेट, सो इट बिकम्स लाइक अ super food for you. You don't need to think, you had a vegetables, you had your fiber, you had your protein, और उसके साथ चाहिए तो आप एक रोटी खा सकते हो, so your carbs is also, so it is a complete source of breakfast if you are not eating the eggs. Now if you think कि मैं तो egg नहीं खाती हूँ, I don't eat that, so what are the options I have? What I suggest normally, think of what you eat right now. अब क्या खाते हो ब्रेकफास्ट में? पोहा खाते हो, इडली खाते हो, डोसा खाते हो, उपमा खाते हो, दलिया खाते हो, मे बी पराठा खाते हो. All these things you eat it. Now I'm not telling you that you should completely change. इसको छोड़ के आप कुछ और ही खाओ. No, I'm not telling that. What I am trying to tell you, how can you make these same food item more healthy so that you have a more vegetables and you have a good protein source in that? तो आप कैसे कर सकते हो? I want to listen from all to you. Suppose if you are eating a poha, आप पोहा को ज्यादा हेल्दी कैसे कर सकते हो? How you can make it more healthy? Let me आपसे ही पूछती हूँ. Egg yolk can we have? As I yes, what I told you right now, it is completely safe. बाहर का खाना खाते हो, you go to the restaurant with your family, जो करी खाते हो, have you ever imagine, have you even think कि वो करी किस में बनती है? वड़ा पाव खाते हो बाहर का, have you even think कि वो ऑयल कितनी बार रिपीट हुआ है? Same oil that person or that restaurant has used so many times. Did you ask yourself? वो अनहेल्दी खाना खाते वक्त हम खुद को हम आस नहीं करते हैं, बट व्हेन यू हैव टू ईट द गुड हेल्दी फूड, द योक, we ask ourselves it is healthy, so it is completely healthy to have it. 1 egg in a day, or those who have like a weight loss goal, 2 eggs in a day is completely safe to have it. Great. Yes. Yeah. Eat with curd. Yes, absolutely, you can include curd. Curd is like a good fat source. Now आपको what you have to think, you have to think in 2 way कि मैं कैसे उसको ज्यादा हेल्दी बनाऊं. वेजिटेबल्स एंड अ सोर्स ऑफ प्रोटीन. तो क्या ऐड कर सकती हूँ उसको? ऐड वेजिटेबल्स इन पोहा. वेजिटेबल्स मतलब फाइबर हो गया. प्रोटीन के लिए क्या करोगे? Add some groundnuts to the poha. Groundnuts is again a good fat. Now you have to ask these questions to yourself. What is the source of protein that you will eat it? Groundnuts is a more of healthy fat. Protein है उसमें लेकिन कम quantity है. By adding groundnuts and lots of veggies, of course, it is a good source. Include soya. This is a good that Ruchi has said. See, it's a fantastic way that she has find out. पोहा में आप सोया के ग्रैन्यूल्स डाल दो, उसमें वेजिटेबल्स डाल दो, क्या हुआ? कंप्लीट हेल्दी हो गया. या इफ यू डोंट लाइक अ सोया, you can put some sources of tofu, or you can put maybe grate पनीर, और उसके ऊपर नहीं डालना है तो सेपरेटली 2-3 पीसेस खा सकते हो. राइट? अंडरस्टूड what I'm trying to tell you. अभी आप अगर if you are eating a dosa, how you will make it more healthy? डोसा तो बनाया, खा लिया. What you will add? Yes, paneer or egg. Absolutely. Lots of vegetables. Yes, Meenakshi, very good. Lot of vegetables. Paneer or egg. Yes, absolutely. Yes.
millet additions in the idli recipe in place of rice or idli? Absolutely, you can make it. You can add the millet. We will go in that. Yes, millet is a good source, again a protein, and of course it's a good source of actually of fiber. I'll say not much of protein. More sambar with vegetables. Absolutely. और उसको प्रोटीन रिच बनाना है. वी ऑलवेज फॉरगेट अबाउट प्रोटीन. हाँ, प्रोटीन हमारे दिमाग में ज्यादा आता नहीं है बिकॉज वी आर नॉट यूज टू. कैसे करोगे? क्या करोगे? इफ आई वांट टू ईट डोसा विच इज हेल्दी, व्हाट आई शुड डू? काला चना. काला चना इज अगेन अ गुड. इट्स नॉट अ प्योर लीन प्रोटीन. आई विल से उसमें बहुत सारे कार्ब्स भी होते हैं. आप ज्यादा खाओगे तो आपका कैलोरी इनटेक बढ़ेगा. एंड व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट आई टोल्ड यू, कैलोरी बैलेंस हमने देखा. पोड़ी पाउडर, यस, दैट यू कैन यूज इट. जो एग खा रहे हो, एग ऐड करो, पनीर ग्रेट करो, टोफू ग्रेट करो, सोया ग्रैन्यूल्स ऐड करो. Adding various dals are not good source of protein. It's not a pure source of protein. You can use it, but you are not going to get a ज़्यादा उसमें आपको नहीं मिलेगा. Yes, add veggies and tofu. Absolutely fantastic. So this is how you need to think. तो हमारा breakfast कैसे होगा? Sprouts add कर सकते हो. Sprouts is a good source of protein. मूंग दाल add कर सकते हो. If you like if you're a vegetarian, you can add a moong dal, you can add a sprouts. So here are some of the examples. Moong dal chila, mixed dal chila, idli with sambar, dosa with chutney, boiled egg omelette. But I have beside it, what I wanted you to tell you, what I have told you, make it more, हेल्दी बाय एडिंग द प्रोटीन ऑल्सो. जैसे रेड वेजिटेबल पोहा यहाँ पे लिखा है, बट रेड वेजिटेबल पोहा को मैं और ज्यादा हेल्दी कैसे बनाऊं? मैं लाइक रुचि टोल्ड शी कैन ऐड द सोया ग्रैन्यूल्स और मेक इट, कैन ऐड few slices or grate tofu or grate paneer, or those who eat egg, just boil one egg side and उसको side में खा लो, हो गया. So these are the some options of like breakfast options that you can definitely have. If you want, you can take the screenshot of that. Or I don't want you to depend on something else. So these are some of the healthy breakfast options. What I wanted to you कि अब जो आप खा रहे हो उसको ही आप healthy बनाओ. If I tell you and tell कि नहीं कल से आपको ये खाना नहीं है, आपको सिर्फ ये खाना है, then you get more confused. You understand कि जो मैं खा रही हूँ उसको ही मैं healthy कैसे बनाऊं. And these are some of the breakfast healthy options that I just wanted to give you. In case if you are still confused, just go ahead with this. So this is how your breakfast plate should look like. It should have a nuts. अगर आप सुबह आपने फ्रूट खा लिया है तो नट्स ऐड करो, या नट्स खा लिया है तो फ्रूट. तो इट डिपेंड्स. नाउ यू नो कि आपको क्या, हाउ टू रिप्लेस, क्या करना है. एंड देन ऑफ कोर्स हैव योर ब्रेकफास्ट जो हमने अभी डिस्कस किया है. एंड अलोंग विद दैट देन you can have and enjoy your cup of tea or enjoy your cup of coffee. I'm not telling you need to avoid it. खाने के बाद आप खा सकते हो. Definitely. You can enjoy your tea, you can enjoy your coffee after your breakfast. So, did you learn something today? कि क्या करना चाहिए, कैसे मुझे मेरी ही ब्रेकफास्ट को हेल्दी करना चाहिए. Now what I am telling you is even also it is a good strategy for you to keep your calories in control. आप अगर सिर्फ पोहा खाओगे तो पोहा इज नथिंग बट द कार्ब्स. अब ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तो आपका कैलोरी भी बढ़ रहा है. बट व्हेन यू ऐड द वेजिटेबल्स, व्हेन यू ऐड द पनीर और एनी सोर्स ऑफ प्रोटीन इन दैट, ऑटोमेटिकली आपका ये पोहा का क्वांटिटी कम हो रहा है क्योंकि आप उसमें वेजिटेबल्स और बाकी की चीजें ऐड कर रहे हो. तो ऑटोमेटिकली व्हाट यू आर डूइंग इट, यू आर ईटिंग less of this poha and you are including other vegetables, and that way you can control your intake of calories in a healthy way and not just giving up your food. मैं ब्रेकफास्ट नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ सूप पीऊंगी, मैं सिर्फ स्मूदी खाऊंगी, मैं सिर्फ सलाद खाऊंगी, मैं सिर्फ ये. These are not the way to go. How long you will do?
कितना वीक करोगे? 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, जिंदगी भर करोगे? You need to ask yourself, whatever diet I am following right now, will I be able to follow for next 3 months? पूरे 12 weeks तक मैं कर पाऊंगी? अगर आपको आंसर yes मिल रहा है, then it is a right way to go. If your answer is no, you are not in a correct, if you are not doing a correct way. May you will see कि आपका weight loss हो रहा है, आपका number नीचे जा रहा है, but that's not the healthier sign of losing weight. The healthier sign is to eat in balance with more of fiber, vegetables, and including protein in equal quantity. So this is how your breakfast plate should look like. Yes. Oats also you can use. Oats, आप खा रहे हो तो oats के साथ again same thing. See, oats and poha is again a same thing. आप oats भी बना रहे हो, even though if you're making a oats, I will tell you to add the vegetables and again something which source of protein in that. कुछ भी आप खा रहे हो उसको ऐसे आपको बैलेंस करके खाना है. When you eat in balance, you will see the good improvement. So yes, did you got it? Our second mini habit, starting a day with nuts or fruit and having a protein rich and fiber rich breakfast. This is your mini habit 2. And next session, now our next session is on Saturday. Yeah, today is Thursday. Saturday we will discuss how should be your lunch plate, कैसे आपको अपने lunch plate को डिजाइन करना है, and how should be your dinner plate. For yes, so that we will discuss on Saturday. Yes, oats with children seeds. No, I didn't get what is that. आपको, even though if you're having a seeds is a good source of healthy fat. You need to ask yourself, healthy fat है तो उसमें chia seeds, yes, chia seeds is again a healthy fat. It's not a protein. It's a good source of healthy fat. मतलब आप वो ऐड कर सकते हो, पर उसके साथ आपको दूसरा कुछ और भी ऐड करना हो. वेजिटेबल्स ऐड करने हैं. मोर इम्पोर्टेंट इज योर वेजिटेबल. अगेन आई एम रिपीटिंग, fiber and protein is a good source. Include enough of vegetables and protein. I cannot emphasize more on that. Yes. So now if you have any question, if you want to ask anything, if you have doubts, feel free to ask me. We will clear all your. Then don't tell me that personal message भेज के, if you're asking me, I will not revert. Because telling in one liner doesn't make any sense. I will not able to describe everything in their personal message. So whatever doubts you have, you can ask me here right now. And of course, इसके बाद हमको how we have to eat after we done with our lunch plate and dinner plate. The next session will be how you need to eat. अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, हेल्दी खा रहे हो लेकिन ओवर ईटिंग कर रहे हो, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ईट इन बैलेंस हाउ मच योर बॉडी इज रिक्वायर्ड. नाउअडेज मोस्ट ऑफ अस ह्यूमन बीइंग्स डू द ओवर ईटिंग. हमारे बॉडी को इतनी जरूरत नहीं है, but still we eat it. We are got used to of doing the overeating and our body don't require so much of food. And that's the reason all the lifestyle disorders and the obesity is the main problem because of that. Yes. Chia seeds hoga. Yes, chia seeds. Chia seeds, as I told you, it's a good source of healthy fat. Healthy fat is equally important. That's why I told you why you need to eat nuts, because it's a good source of healthy fat. Nuts के साथ आप seeds भी add कर सकते हो. That is also a good source of healthy fat. But then again, as I told you, quantity matters, because वो आपका अगर calorie intake बढ़ा रहा है, you will not see कि आपका weight loss हो रहा है. So it has to be in proper quantity. Yes. Although we have attended this earlier, but again, each session gives more informed about it. Yes, I try to make sure that कि मैं कुछ ना कुछ नया add करते जाऊँ. So from my end, I will try to, whatever I learn, I make sure that I, pass it to you. Yes. So any questions if you have, you can
You can ask me, or any doubts if you have, you can ask me or give me your feedback if you have learned something new. So let me know, so I will also know from your side. Ma'am, workout day. Array. Good that you have reminded. Workout days need to be discussed. Now you have to tell me. Like, see, let me first share my view, and then you guys can definitely tell. One session for how much to work out. Yes, we will going to have once we finish this food habit का session, उसके बाद वाला जो होगा वो workout वाला ही होगा. So don't miss that session also. और workout के बाद होगा आपका hydration and the sleep, which is equally important, and the last one will be for your emotions. So ये सारे, as I told you, these are the 6 pillars of the health. हम सारे 6 pillars को cover करेंगे. Make sure that you come and stay there in this live session. नहीं आओगे तो मुश्किल है, then you will not. No, we will be covering all the 6 pillars. Yes, we will talk about the workout के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए. Everything will be talked about. Yeah. Okay. Now about the workout days. See, why I tell you the alternate days is most of us are having a, like, we are not sitting at home कि पूरा दिन हम घर पे बैठ के आराम नहीं कर रहे हैं. We all are having a different kind of works. Whole day we have do all the works. So if you have a 1 day rest, आपके muscles को भी एक दिन का rest मिलता है. And when you get the rest for 1 day, you are getting ready for the next day to do it. So Monday we do the HIIT, then Tuesday you get a rest, Wednesday you can do it, again Thursday you get a rest, and Friday we do it. Saturday it's a bonus session, actually I take it for everyone, and Saturday is a weekend. Most of you have a holiday, so you can definitely, that's the reason we have, these are designed like that. Now if you think that Monday, Tuesday, Thursday, Friday, if you want, if all the members are ready, we will go ahead with that. If not, then it will be difficult, because let me be very clear. All of you have come to this community, and before paying, you have already paid because you know this was the schedule. Now every one of you are okay with that schedule. Now if one person is also if not okay with this new schedule, we will not be able to change, because it will be like doing injustice to others. So if all are ready, I am ready to change. If not, then it will be a difficult. So now you all have to, especially those who are live. जो live नहीं आते हैं, उनके लिए तो कुछ problem नहीं है. Especially those who are live, those regularly come for the live sessions. For them, I will say you all give your opinions. We'll do one thing. एक-एक करके सब अपना opinion दे दो. And I want somebody to volunteer. Lakshmi या हेमलता, जो भी है, कोई भी है, you have to count the votes. Votes को count करो. All of you. Now it's in your hand. I am ready for both the options. See, Monday, Tuesday, Thursday, Friday. What I am telling you again, the same thing again and again I am telling you. Many women's there. This is like a women curve. We have a major women's here. हम हर एक को, what I feel, I don't know it is correct or not. You have to tell. All of you have to tell. It is not just the workout that you have to do. You have to do all the घर का काम करके आपको ऑफिस जाना पड़ता है और वापस आना पड़ता है. And again, that's the reason I feel if you are okay, then I am okay. If not, now Himlata, yeah, you can unmute yourself. You tell. Let's take the opinion from everyone. Please switch on your camera. जो कैमरा पे आया है मैं उसका ओपिनियन ले लूंगी, बाकी लोगों का ओपिनियन नहीं होगा. Monday, Wednesday, Friday, Saturday. Monday, Wednesday, Friday, Saturday. You're okay with that? Yeah. Okay.
Do you okay with Monday, Tuesday, Thursday, Friday also? What is That your become little tiring, मैम. और सैटरडे को थोड़ा लीजरली वर्कआउट करने का टाइम लगता है बिकॉज इट्स एन ऑफ. तो मैं सैटरडे का वर्कआउट सेशन मिस करती हूँ. इन दिस केस मेरे लिए चारों वर्किंग डे हो जाते हैं, मंडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे. तो मेरे को सिर्फ एक दिन का ब्रेक मिलता है. तो थोड़ा टीडियस हो गया था. एंड देन वी आर काइंड ऑफ यूज्ड टू काइंड ऑफ मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे वर्कआउट. So our body, maybe it will take some time to adapt, but right now I'm feeling it's Yeah. difficult to do it. ओके सो आई ऑल्सो गॉट द ओपिनियन फ्रॉम द मेंबर्स कि उन्होंने अपना बाकी का शेड्यूल ये शेड्यूल के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है. मेनी पीपल हैव टोल्ड मी लाइक ठीक है. सो यू आर कंफर्टेबल, यू आर सेइंग कि यू आर ओके विद मंडे वेडनेसडे थर्सडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे जो करंट शेड्यूल है उससे. हु इज देयर? बुमा अनम्यूट करो और बोलो. आई वांट ऑल जो नॉर्मली लाइव आते हैं उनसे ही बात करेंगे. या बुमा, you can unmute yourself. Nishu. हाँ कहाँ गए? Okay, then somebody else. Lakshmi. मैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे. Okay, Lakshmi 2. अब Lakshmi 1, Lakshmi 2. मैम मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे मैम. बट तुम लोग सब लोग ने वोटिंग किया था ना मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे. No, no मैम. From the How many first of- Okay, how many of you voted for Monday, Tuesday, Thursday, Thursday, Friday? Anyway, take it. This is the final poll now. Okay. Kokila, Buma, come on, you can unmute yourself and you can talk. I'll stop the recording. Yeah, continue. Monday, Tuesday,